Hello, am I audible? Hello. Kant, am I audible? Hello, Priya, am I audible? So yes, sir. Oh, why are you not saying then? Let me share my screen. And we begin. So, where are others? Is my screen visible? Yes, sir. Okay, let's begin. So, last lecture, at the end, we were discussing sesquilinear functional. Okay, let me recall it again. Yeah. So, wait a minute. Only three are there. Where are others? Okay, let me recall sesquilinear functional for you. So you all have seen the definition. So let me recall it again. We have two vector spaces x and y. These are two vector spaces over same field. Okay, over say C. A sesquilinear functional h from x cross y to C. So this is a functional, h is a functional. It is sesquilinear if number one, h is linear in first coordinate. So this means oh sorry. Okay, this is true for all x1, x2 in x and y in y. Secondly, h of alpha x comma y is alpha x comma y, and this is true for all alpha in C, x comma x in x and y in capital Y. But it is antilinear or conjugate linear in second coordinate. So this means h of x comma y1 plus y2 equal to hx y1 plus hx y2. This and hx alpha y is nothing but alpha bar hxy. This is true for all alpha in C, x in x, y in y. Okay,
Because of this fourth property, it is called sesquilinear. Okay. When we take, instead of C, if we take the field R, you see in R, for any alpha, alpha bar equal to alpha, so when we are in the vector real vector spaces, the last property says hxy equal to alpha bar is now alpha hxy. So in this case, this is linear in second coordinate as well. So this means what we have so sesquilinear means either it is if it is a real vector space, if both x and y are real vector space, then it is sesquilinear. If it is bilinear, so bilinear means it is linear on both coordinate, in both coordinate. Okay. And when we are in complex case, sesquilinear means linear in first variable and or first coordinate, and it is conjugate linear in second coordinate. So when we talk about functionals, we talk about its norm. Okay. Uh, if we are in normed spaces, now we take x and y normed spaces, and let us talk about um, norm of uh, norm of h. So you know how do we define norm of a bounded linear functional. So if h is bounded linear functional, then there exists some c which satisfy this, and this is true for all x comma y in sorry, for all x in x, or you can say for all x comma y in x cross y. Okay. So so if this happens, then we say h is uh, h is bounded, and we define its norm by you all know how do we get this. So you have already seen all these things, and this is same as when we take supremum of mod of hxy, where norm of x equal to 1 and norm of y equal to 1. This is same as this, and this is called norm of h. It's called the norm of h. Wait a minute. Somebody sending me a message. Okay. So in representation theorem, we saw if we are in a Hilbert space and we have a bounded linear functional, then there exists a unique uh, z in H such that the bounded linear functional is given by an inner product which depends on that z. Okay. You have seen that. A similar theorem is true for sesquilinear functionals. So let me state the theorem for you. Theorem.
Let H1 and H2 be two Hilbert spaces over the same field. Two Hilbert spaces over the same field K, and we have a sesquilinear functional, okay, which is bounded. H is HP bounded sesquilinear functional. Then this theorem says that it has a similar representation as we saw in Array's representation theorem. Then H has a representation of this form, okay, where this S is a unique bounded linear object by H, okay, and it has norm this. So this is what you have already seen in Rees representation theorem, and the proof is also easy. Proof, let's see a proof of this. Consider hx bar, hxy bar, okay. You know H is sesquilinear. This means let's see whether what h bar is, whether h bar is sesquilinear or something else. So take x1 x2, okay, so this part will be easy. So let's take alpha x comma y. So by definition this is alpha h x comma y whole bar, which is alpha bar h x comma y, okay. So whole bar, here you are getting this. And what about this y alpha x bar, okay. So this will be h alpha xy. No, let me write it again. You know h is sesquilinear, so this means this is alpha bar hyx whole bar. So this is alpha bar bar hyx bar. So alpha bar bar is alpha h. Oh, I did something wrong, but it's okay. You all know what I am writing. So here y, this y comes from h1, this x comes from h2, okay. So what you get this. So this means
h bar comma is linear in second coordinate. This is clear from this calculation. This is clear from this calculation. Now fix an x in h1, and you know, in that case, when you fix x, this is a linear functional on h2. H bar x y is a linear functional on second coordinate on h2. So by this representation theorem, there exists in h2 such that h bar xy is y comma inner product yz. Okay, and from here, let's see z comma y. This is same as yz bar, which is same as hxy. Okay, so call it star. So this z is unique. Okay, and it depends on x. So this means we are getting a function s from h1 to h2 which sends x to z. Okay, so call this function s. So see here, this is a unique vector and which depends on x. So this is a there is a function which sends each fixed x to a unique z in h2. So call that function s, and this, so this means sx equal to z. Okay, now you may substitute this z by sx. So you may substitute okay, you write here at in place of z as x now. So what you get xy is sx comma y. Correct? Any doubt? Hello? No, sir. Okay. So now the only thing that you have to show that this s is linear. So now show that s is linear and it is bounded. Okay. This is what you have to show. And one more thing, it is unique. So you will easily be prove that this s is linear. There is nothing hard in proving s is linear and s is bounded. Okay, so you will do it your own. I'll leave this for you, and let's see why this norm h equal to norm s. Let's see this, and but this is also easy. You know, norm h is by definition. Oh, this is h1 now. Y in h2. This is by definition sx comma y by norm x norm y. Okay, and put y equal to hx. So this is greater than supremum in h1. Okay, inner product sx comma sx by norm x. But you know, oh, this y is norm sx.
like this. You know this inner product Sx is norm Sx square, so it will be norm Sx by norm x supremum 0 not equal to x in h. So, and this is the definition of norm s. So from here what you get, norm h is greater than equal to norm s. And for proving other equality, other inequality means you have proven one inequality. Now you will prove norm h is less than norm s. For this, what you do, use Cauchy-Schwarz lemma. Sorry, Cauchy-Schwarz inequality. Okay, Cauchy-Schwarz inequality says Sx comma y. This is less than norm Sx, norm y. Use this, you will get the desired thing. So let me write it for you. So this is the definition of norm of h. Norm x, norm y. And now use Cauchy-Schwarz here. This is norm x, norm y, norm x, norm y. Norm y get cancelled, supremum over x in h1. So this is norm s. Okay. So hence norm s equal to norm h. Next thing that is you will prove is S is unique, and that is also very easy. Assume that there exists another linear operator T from H1 to H2 such that Hxy equal to Sx comma y equal to Tx comma y, and this is true for all y in H2 and x in H1. Okay, so use this. So from here this is Sx comma y minus Tx comma y 0. So this implies Sx minus Tx comma y equal to 0. This is by the property of inner product. So inner product is also a sesquilinear functional. Okay, inner product is also a sesquilinear functional. You know, inner product is linear in first coordinate and it is conjugate linear in second. Okay, so this is true for all y in H2, x in H1. Okay, and now put y equal to Sx minus Tx. See, when x belongs to H1, Sx belongs to H2, Tx belongs to H2, Sx minus Tx will also belongs to H2. Put y equal to this. So using this relation, what you get, Sx minus Tx comma Sx minus Tx equal to 0. And by definition, this is nothing but norm of Sx minus Tx square, and this is 0. And norm x square is 0 if and only if x is 0. So this is if and only if Sx minus Tx is equal to 0 or Sx equal to Tx for all x in H1, and this implies S equal to T. So you have proven that S is unique. Okay, any doubt, question? Hello? सर ये y इक्वल एस एक्स माइनस टी एक्स एच टू में कैसे, ये बताइए सर एक बार. ये किसी भी y के लिए ट्रू है ना, ये सब y यहाँ लिखा है मैंने फॉर ऑल y इन H2. हाँ हाँ फॉर तो ऑल आपको y. ये
हाँ, वो किसी भी y के लिए ट्रू है। आप एक y पर्टिकुलर y चूज कर लिया आपने यहाँ पर, ये एस एक्स माइनस टी एक्स एच टू का एलिमेंट है या नहीं है? 6 minus 6 है सर। s from s is a linear operator from H1 से h1 to h2। H1 से H2 में है। x मेरा, जब मैं x को h1 से लेता हूं तो sx कहां पर जाएगा? h2 में एलिमेंट होगा, वेक्टर होगा, ठीक है। यस यस सर। सेम चीज tx के साथ है जब, ओके। हाँ तो वही दो हाँ। h2 एक वेक्टर स्पेस है, तो उनका जो सब्ट्रैक्शन करोगे एस एक्स माइनस टी एक्स सब्ट्रैक्ट करोगे, डिफरेंस जो है वो कहां पर होगा? वो एक वेक्टर होगा h2 में। यस कॉल सर। दैट y, कॉल दैट y। तो पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर आपने चूज कर लिया, ठीक है। ओके सर। ओके, सो यहाँ पर आपने एक और चीज नोटिस करी, क्या नोटिस करा? सपोज यू आर, ओके 1 मिनट, ये क्या होगा? ओके, यहाँ पर क्या आपने नोट किया? सपोज you have an inner product, okay, from say s cross x to say c or r, whatever you take, r ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। Okay, then if x comma y is 0 for all y in x, this implies x equal to 0. So this is a lemma for you. So this is a general lemma that we used here. Okay, ये देखने के लिए बहुत इजी है। आप put x equal to y. Okay, since this is true for all y in x, put y equal to x, because x is also belongs to y. Sorry, x is also a vector in capital X. Okay, so this will imply x comma x equal to 0. This will imply norm x square equal to 0. And you know this is true if and only if x equal to 0. Okay. Now we come to another notion that is called adjoint. Hilbert adjoint operators. First, I give you a definition, then I will show that this definition is well defined. Means whatever I am writing there, all these things they exist. Okay. So first, I'll give you a definition. So suppose we have two Hilbert spaces H1 and H2, and T is a linear operator from H1 to H2. H1 and H2 both are Hilbert spaces over same field units. This is a linear operator. Okay, operator which is bounded. Which is bounded. Then the Hilbert adjoint operator T star from H2 to H1 okay, wait a minute, let me write it in. Then the Hilbert linear operator T star of T is, which operator is the operator T star, now it is from H2 to H1, such that
tx comma y equal to x comma t star y, and this is true for all x in h1, y in h2. Okay, so this tx comma y, so so where these inner products are, so this tx belongs to h2, y belongs to h2, this inner product is in h2. Okay, and while this the inner product in right hand side, see, x belongs to h1 and y belongs to h2, therefore this t star y belongs to h1, so this is in h1. Okay, so if there is no confusion, at that case we omit this h1 h2. It is well understood where these inner products are. Okay, where these inner products are, we know where they are. So the first question is whether this definition makes sense or not. So let's see this, whether there exists such a there exists such a linear operator t star for given t. Okay, so for that, let me write a theorem. Let h1 and h2 be Hilbert spaces over the same field, and t from h1 to h2 be a bounded linear operator. Okay, then there exists a unique bounded linear operator T star from h2 to h1 such that txy is same as x t star y for all x in h1, y in h2. Moreover, their norm are equal, means norm of t star is same as norm of t. So this theorem says that such a t star exists. Okay, so therefore this definition makes sense. So let's see a proof of this theorem where we will use uh, this theorem that we just proved for sesquilinear functional. Okay, we will use this. Okay, let's see a proof. Let h y x equal to y comma tx, this inner product, and this h, if we have this, then h is sesquilinear. Okay, so what we did here, we define h from h2 cross h1 to
to the field K, okay, by H yx equal to ytx. And we are saying that H is sesquilinear. H is linear, and it is easy to see why this is so. Take so only thing that you need is needed to prove is this: y t alpha x, okay, but t is linear, so this is alpha tx, and this is nothing but alpha bar y comma tx, and y comma tx is nothing but hyx, alpha bar hyx. So this shows that H is sesquilinear, okay, and this is easy to see: x1 comma x1 plus x2 equal to hy x1 plus hy x2. This part you can easily see, okay. Okay, so we have given that T is bounded. We are given that T is bounded, so it will give us that H is bounded. H is bounded, and why so? Because hyx mod is the same as ytx mod, and use Cauchy-Schwarz here. It will be norm y norm tx, okay, and this is nothing. See, norm tx is less than equal to norm t norm x, correct? So this is nothing but norm t norm x norm y, okay. So this thing gives H is bounded. So now you are in a position to use the theorem that we proved for sesquilinear functional, okay. Okay, before using that theorem, let me show you that so what we have proven so far. We have proven that H is bounded and norm of H is less than equal to norm of T, okay. So here we have proven this thing, and now we claim that norm of H is in fact greater than equal to norm of T, and both these two implies norm H equal to norm T, okay. So this part is easy, so we use same trick above. So by definition, norm H is supremum y comma tx by norm y norm x, okay. Take y equal to tx, so this will be supremum 0 not equal to x in h1 tx by norm tx norm y. But the expression in the numerator is nothing but norm tx square, and we have norm tx in denominator, so what we left with norm tx by oh, this is not y, this is x. See here, this is x, we have replaced y by tx. Okay, this is equal to this thing, but
this whole thing is norm of T. So we are done. So therefore we have proven norm H equal to norm T. Now what we have a sesquilinear functional from H2 cross H1 to K, which is bounded, linear, and norm H equal to norm T. We have all these things. So we can use that theorem. This theorem says that if we have a bounded sesquilinear functional on H2 cross H1, then there exists functional, okay? There exists a functional S. Let me show you the theorem. See here, we have a functional, okay, bounded sesquilinear. Then this H has a representation of this form, means there exists a unique bounded linear operator. Here we were taking H1 cross H2, and now what we are taking here, we are taking H2 cross H1. So S will be from H2 to H1, okay? So call that S as T star, okay? Writing T star for S in the representation theorem above for sesquilinear functionals, okay? So what you get Hyx equal to T star y comma x, okay? And from that theorem, what you know T star from H2 to H1 is a unique bounded linear functional, and norm of T star is same as norm of H. This is what you know from here, that theorem, but you have just proven here norm H equal to norm T, correct? So using the definition of Hyx, you get T star y comma x equal to Hyx, but by definition Hyx was, see here, Hyx is ytx, inner product ytx. Now take conjugate both sides, conjugate, conjugate, conjugate. So when you take conjugate, this will become x comma T star y, and this will become Tx comma y. This is what we wanted to prove, okay? This means in fact T star is the operator that we were looking for. So we have shown the existence of T star. This implies the definition of Hilbert adjoint operator makes sense, okay? Any question? Okay, if not, so you all know that any linear operator, say if we are in, suppose we are in Cn to say Cm, any linear operator can be represented as a matrix. You know this? Any linear operator will be represented as a matrix of order m cross n, okay? हेलो, मेरी आवाज, हाँ, ये आप जानते हैं, ये फैक्ट, हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जब आप वेक्टर स्पेस से पढ़ते हैं तो उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख पाते थे, जब अगर आपके पास बेसिस गिवन है
आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स के बीच में कोई रिलेशन देखा है? हेलो, आप तो ऐसे चुप हो हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे हाँ या ना? ये जानते हैं ना आप, हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखी जा सकती है. ओके, so we will see that if t is a linear operator in here, this means we have a matrix of order m cross n. Then we will see that t star will be a matrix of order n cross m, and there is a relation, say this is a matrix A, this is a matrix B. The relation will be transpose of conjugate transpose of B is A. So वो उसका conjugate transpose को क्या कहते हैं आप लोग? Tranjugate. Okay, so if T is given by a matrix, then T star will be its tranjugate. Okay, so this is an exercise for you. So take this as an exercise. So that if T is a linear operator from Cn to Cm, T star will be tranjugate of the matrix A, where A is matrix corresponding to the linear operator T. Okay, so and one more exercise for you. Prove that if you have zero operator, means zero from h1 to h2, this is a linear operator. Prove that its conjugate, its adjoint is 0. 0 star is 0. Similarly, if we are in this case, means we have identity linear operator, then what is I star? Okay, so find I star. This is an exercise for you. सर ऊपर वाले का ट्रांजिट प्रूफ करना है. हाँ अप्रोच क्या? सर ये टी ट्रांजिगेट को मैं दिखाया कि ट्रांजिगेट है टी का. हाँ अप्रोच देना होगा सर, एक बार ऐसे बता दीजिए किस अप्रोच से करना है. आपको आप जानते हैं if we are in Cn, so how do we define inner product in Cn? So Cn means if x is given by xi1, xi2, xin, and y is given by eta1, eta2, eta n, what is this inner product xy? eta1 xi1 का समेशन होता है. हाँ, xi eta I bar. ओके, ठीक है. Okay, now you know this from your linear algebra course that T can be represented as a matrix. ये तो आप जानते हैं linear algebra से? Yes sir. Yes Okay. sir. तो अभी हम चल रहे हैं, मान लो Cn to Cn है हम, ठीक है? T from Cn to Cn. So this is a n cross n matrix. This is n cross n matrix. Okay. Now T is from Cn to Cn. Take x in Cn, x equal to say lambda 1, lambda 2, lambda n, and say y equal to mu1, mu2, mu n.
So this x can be represented in terms of basis. This x is nothing but summation lambda I ei, where ei is, where e1 is 1 0 0 0, e2 is 0 1 0 0 0. Okay, you know where what these ei's are. So I equal to 1 to n, and similarly y equal to summation mu I ei I equal to 1 to n. Okay, ठीक है. So what is the relation between t and t star? txy is same as x t star y. Okay, so let's calculate this. What is tx? Tx is summation lambda I ei, but t is linear, so this is summation lambda I t ei. Okay, ठीक है. Yes, sir. Okay, and one more thing. एक मिनट थोड़ा सा वेट करिए. Okay, so we have we can write t. So this is one thing, and what so from here you have t equal to alpha ij. So what is TEI? This is alpha ij acting at EI. Okay, correct? So this means Tx will be summation alpha ij lambda I. So this EI is a vector 0 0 1 0 of this form. Okay, so you have this thing. Correct? EI भी होगा ना. हाँ, वो EI क्योंकि 1 0 0 है ना, 0 1 0 0, तो उसकी मदद से आप निकाल लोगे वो क्या होगा. ठीक है, जो वो ऐसे फॉर्म का आएगा. और ऐसे टी स्टार देखोगे क्या है. ठीक है, क्या रिलेशन है उनके बीच में, और वो दोनों सेम होने चाहिए. ठीक है, Yes. आपको ये रिलेशन मालूम है? सर आपने इसके टी साथ एक्स ये आगे लिखा जाएगा क्या? क्या इसके साथ ये अल्फा आई जे है, इसके साथ हमने ई रखा है TEI, तो हाँ, EI नहीं लिखा जाएगा क्या यहाँ? टी व्हाट इज TEI? EI क्या है? 1 0 0. आपने एक यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, उसका Yes, ये वाला मीन्स आपको मालूम है यहाँ पर क्या आएगा. sir. एक उसकी रो आएगी, कोई एक रो आएगी ना. Yes, sir. हाँ, ठीक है. Okay, sir. तो रिलेशन तो अभी हमने पीछे प्रूव भी किया है ना. हाँ, तो आपने दिया भी था pxy का जो इनर प्रोडक्ट है इज इक्वल टू x t स्टार y. हाँ, उसका यू अब ऐसे ही आप सेम किसके लिए करोगे? सेम टी स्टार के लिए टी स्टार के लिए निकालोगे. तो यानी कि मैं t स्टार t की जगह t स्टार x y कर दूंगी तो वो x t स्टार ऑफ स्टार y यानी कि t के इक्वल हो जाएगा ऐसा. हाँ, अब एक मिनट मान लेते हैं. अब टी स्टार के लिए देखते हैं. टी स्टार के लिए क्या आएगा? टी स्टार y कितना है तुम्हारा? μ1 μ2 μn है. ठीक है, तो सेम इसी ऐसे ही करके वो बीटा आई जे म्यू जे ऐसा कुछ आएगा. ठीक है, बट जब आप
txy करोगे तो ये कितना आएगा, txy विल बी, ये था तुम्हारा, ये आ जाएगा समीशन अल्फा आई जे लैम्डा आई म्यू जे बार, ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पर दो समीशन आएंगे, एक जे पर डिपेंड करेगा, एक आई पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सिमिलरली ये रफली ऐसा कुछ होगा, इसको आपको सही से कैलकुलेट करोगे तो पूरा आई जे पर आपका होल्ड होगा, ठीक। और x कॉमा टी स्टार वाई, दिस विल बी, x कितना था, ईटा जे था, सॉरी x जे था लेमडा था, ठीक है। सो ये आएगा समीशन लेमडा लेमडा आई बीटा आई जे म्यू जे बार। अब इसके बीच में रिलेशन देखो, ये दोनों सेम है, तो ये और ये कब सेम होंगे, यहाँ पर म्यू जे बार है, यहाँ पर लेमडा जे है, यहाँ लेमडा लेमडा आई लेमडा, सेम लेमडा आई है, म्यू जे बार, और इधर है ये बीटा आई जे बार और उधर है अल्फा जे आई। सो ये हाँ यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिसमैच हो रहा है, ये अल्फा जे आई होना चाहिए था, ठीक है। ये आप लोग जब करोगे तो आएगा, तो मीन्स हो क्या रहा है, अल्फा आई जे इक्वल टू बीटा, इसमें ये देखना पड़ेगा उसका जो जो आपने यहाँ पर मैट्रिक्स लिखी थी, एक मैट्रिक्स ये है, ये सेम मैट्रिक्स है, वहां पर चेंज हो जा रहा है, आई जे एथ कोऑर्डिनेट जे आई एथ कोऑर्डिनेट हो रहा है और उसका बार हो रहा है, ठीक है। ऐसा कब होता है, हाँ ट्रांजुगेट लेते हैं, ट्रांजुगेट लेते हैं तब होता है, ठीक है। तो इसको आपको तरीका समझ में आया क्या करना है। हाँ सर, कि हमें पहले ये जो रिलेशन इसको यूज करना है और फिर हमें दिखाना है कि जो मैट्रिक्स दोनों की बन रही है वो एक दूसरे की ट्रांजुगेट है। हाँ, आपने ये मालूम है, आपको एक मैट्रिक्स लोगे, टी स्टार के लिए भी एक मैट्रिक्स आएगी, जब आप इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं टी एक्स को, तो ध्यान देना है कि कैसे ये मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। और ये आपको मालूम है, ये डायरेक्ट यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, टी एक्स इज नथिंग बट दैट मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स आ रही है एक्टिंग ऑन लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, ओके, ठीक है सर। हाँ, तो ऐसे करके आपने देखना है। आप एक काम करिए, मैट्रिक्स को एक, मैं यहाँ पर अल्फा आई जे लिखा हुआ, आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए, A11 A12 A, टेक अल्फा आई जे एज अल्फा 11 अल्फा 1n अल्फा n1 अल्फा nn। आप अगर ऐसा मैट्रिक्स बना लेंगे और आप इसको, ये आपका क्या था, ये सॉरी, ये आपका tx आएगा, ठीक है। अगर मेरे पास लैम्डा ऐसा है तो ये आपके पास tx आएगा, ठीक है। अब इधर से ये tx कितना आएगा, अल्फा 11 लैम्डा 1 प्लस अल्फा 1n लैम्डा n एक प्लस डॉट 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 अल्फा n1 लैम्डा, तो यहां से क्या आया आपके पास, अल्फा 11 प्लस अल्फा 21 प्लस अल्फा n1 lambda 1 and so on alpha 1n alpha nn lambda n, एक रिलेशन आए, ठीक है। यस सर। ऐसे ही आपके पास बीटा, वहां पर आपको बीटा के लिए मिलेगा जो कि टी स्टार के लिए था, जो कि टी स्टार वाई के लिए मिलता, ठीक है। टी स्टार वाई क्या है, बीटा 11 बीटा 1n बीटा n1 बीटा nn, और यहाँ पर y क्या था आपका, μ1 μ2 μn ना। तो सेम ऐसे रिलेशन मिल जाएगा आपको, बीटा 11 बीटा n1 μ1 बीटा 1n बीटा nn। ये देखना मैं कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है।
अभी यहां से tx मिल गया, तो व्हाट इज txy? txy इज ये पार्ट, तो ये किस तरह का समीशन अल्फा, एक मिनट, अल्फा जे आई के, ऐसा नहीं है, रुको, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से लिखते हैं, तो ये आएगा अल्फा जे आई लेमडा आई इक्वल टू 1 to n। सही लिखा मैंने? ओके, j इक्वल टू 1 to n, अल्फा जे आई लेमडा आई एंड आई from 1 to n, then mu I bar। ये एक आया, ठीक है, देख रहे ना आप इसको? हाँ, सर कुछ जे के लिए बहुत सारा आई चेंज हो रहा है ना सर, तो जे बाहर होगा। अरे जे बाहर नहीं होगा, देखिए इसको मैं आई ले रहा हूँ, ठीक है, ये वाले को, ये लेमडा के साथ जो आ रहा है उसको मैं आई ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये आई, जब आई तो फिक्स रहेगा, चेंज क्या हो रहा है 1 to n, ये जे चेंज हो रहा है, ओके सर। है ना? तो सर सिमिलरली जे एक्स टी, तो बीटा में जो जे है, अच्छा हाँ अल्फा, सॉरी सर मैं बीटा देख रही थी। हाँ तो अच्छा, यहाँ ये बीटा था, ठीक है। अब जब ये बीटा में करोगे तो थोड़ा सा चेंज होगा। अभी देखना क्या है, अब ये एक आया हमारे पास, दूसरा इधर से क्या आएगा बताओ? एक्स कितना था, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा n, तो वो आएगा लेमडा आई, ओके, ये लेमडा आई और इसका बार आना चाहिए ना, तो ये क्या था, समीशन कितना, ओके, म्यू आई बार, तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, जे 1 to n बीटा जे आई बार म्यू आई बार, आई रन्स फ्रॉम 1 to n। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, उन दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, जो भी आंसर आता है वो रहेगा करेक्ट। ओके देन, बीटा आई जे हो जाएगा ना? हाँ बीटा आई, अच्छा हाँ बीटा आई जे हो जाएगा ना। ओके, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ओके सर। तो ये आप एक मैट्रिक्स बना के कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके देन, एनी क्वेश्चन और कोई डाउट है? तो उसमें मैंने कुछ और भी एग्जांपल आपको दिए हैं, वो आप लोग देखिए। एक मैं कल देखूंगा, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, उसको मैं बोलूंगा। सिलेबस कितना रहेगा सर सेकंड टेस्ट में? सेकंड और थर्ड यूनिट, थर्ड यूनिट, ठीक है, सर सेकंड 2 और थर्ड। यूनिट? हाँ तो 2 यूनिट, ऐसे आप तो ऐसे कर रहे, चौंक क्यों रहे? 4 यूनिट हो चुकी है ना, चौथा कंप्लीट होने वाला है कुछ दिनों में। ओके, अगर चाहते हैं तो चौथे को भी रख लेते हैं, नहीं नहीं हैं? नहीं सर, नहीं, ठीक है ना, इतने इतने से काम हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ ठीक है, चलिए, ओके बाय, ड्रॉप योर अटेंडेंस।